Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the prokaryotic cell. So in our last video we have discussed an overview of the cell, that what are the different organelles present in the different types of cells and what are the basic location, the general overview of the eukaryotic cell. So today we will discuss the prokaryotic cell. So pro means primitive and karyotic means nucleus. So prokaryotic cells are those cells in which nucleus is primitive, means nuclear region is not well defined. So there are so many points which can differentiate a prokaryotic and a eukaryotic cell. So prokaryotic cell, these are the primitive cell, these are the old one cell, and these are the unicellular, and the example is bacteria. In prokaryotic cell generally the bacteria come. So the example we can say the blue-green algae, that is not an algae, it is a bacteria, cyanobacteria or the bacteria. So these are the examples of prokaryotic cell. Firstly, just discuss the general characteristics of prokaryotic cell. So in prokaryotic cell the nucleus that is not well defined, न्यूक्लियर रीजन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होगा और उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड. सेकेंड थिंग, लाइक द यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती एक्सेप्ट द राइबोसोम्स. Because in case of prokaryotic cell, mitochondria is there, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, vacuoles, so many organelles are present, but that is not in case of bacteria. Next we can say these are the primitive cells and examples are the bacteria. Their size is small as compared to eukaryotic cells. Then generally the bacteria are the sole member of the prokaryotic cell and their shape is of different type. Bacteria they may be harmful for us, they may be useful for us. लोअर क्लासेस में आपने 8th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था द बैक्टीरिया आवर फ्रेंड्स और आवर एनिमी. कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया लाइक द लैक्टोबैसिलस जो किस में हेल्प करते हैं, मिल्क का को कर्ड में चेंज करने में हेल्प करते हैं. और एग्ज़ाम्पल हैं जो बैक्टीरिया आपके लिए क्या होंगे, यूज़फुल होंगे. इन आवर स्टमक सो मैनी बैक्टीरिया आर देयर विच आर हेल्पफुल फॉर अस, बट देयर आर द सम बैक्टीरिया विच कैन कॉज द डिसीज़. सो बैक्टीरिया की जो शेप्स के अकॉर्डिंग उनको हम नाम देते हैं, लाइक द बैसिलस, इफ़ द शेप इज़ रॉड शेप, जो एक रॉड की तरह अगर शेप होगी तो उसको हम बोलेंगे बैसिलस. Next the coccus. Coccus means round or the spherical shape. Then vibrio. Vibrio means the coma shape. You have heard about the disease cholera. So cholera, so if anybody asks name the bacteria which cause cholera, so you can say vibrio cholera. So this vibrio is for the shape of the bacteria. देन द स्पाइरल, इफ़ अगर स्प्रिंग की तरह इनकी शेप होगी तो उसको हम बोलेंगे स्पाइरल, स्पाइरुलम बैक्टीरिया इज देयर. सो इफ़ दीज आर इन द लाइक 2 राउंड बैक्टीरिया आर टुगेदर देन वी कैन से डिप्लोकोकस. तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिप्लोकोकस. 3 भी हो सकते हैं, ट्रिप्लोकोकस, और अगर एक चेन बनाए तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस. Okay, so these are the different shapes of bacteria. Then the general overview of the bacteria. So bacteria, that is a prokaryotic cell that can cause the disease. So how means it can cause the disease, because it is resistance to antibiotics. If we are taking antibiotics then there will be the no effect on the bacteria due to the presence of this देयर सेल वॉल. जो इनकी सेल वॉल होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को कि जो एंटीबायोटिक से वो बचा रहे.
एंड अनदर थिंग इज द प्लाज्मिड, कि उनके अंदर एक प्लाज्मिड होता है. सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज प्लाज्मिड. So plasmid, it is the small circular DNA that is present in the cytoplasm of the bacteria, and it is separate from the main genomic DNA. Genomic DNA means generally हमने यूकैरियोटिक सेल में पढ़ा है कि in eukaryotic cell in the center nucleus is present and in the nucleus the DNA is present. तो जनरली क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर DNA प्रेजेंट होता है. बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा, एक्सेप्ट दिस न्यूक्लियस, एक्सेप्ट दिस मेन जीनोमिक DNA, जो मेन DNA होगा जिसके अंदर जीन्स होंगे उसको हम बोलेंगे मेन जीनोमिक DNA. तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी होता है जो किस में होगा, साइटोप्लाज्म में, एंड दैट इज नोन एज प्लाज्मिड. इट इज द स्मॉल सर्कुलर DNA. So in your higher classes you will study about the plasmid also. This plasmid is used in the rDNA technology, recombinant DNA technology, कि अगर हमने कोई फॉरेन DNA लेना है, उसके अंदर कुछ चेंज करना है, तो हम उसको बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देते हैं. बिकॉज दिस प्लाज्मिड हैव द प्रॉपर्टी टू रेप्लिकेट विदाउट द सेल डिवीज़न. अगर ये बैक्टीरिया डिवाइड भी नहीं कर रहा तो भी ये जो प्लाज्मिड है अपने आप जो रेप्लिकेट कर सकता है. सो इट नॉट डिपेंड अपॉन द मेन जीनोमिक DNA फॉर इट्स रेप्लिकेशन. एंड दिस प्लाज्मिड ऑल्सो प्रोवाइड द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी टू द डिफरेंट बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड की वजह से क्या होता है, जो आप बोल सकते हो कि उसको ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करता है. सो नेक्स्ट दैट इज़ द साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म दैट इज़ सेम लाइक दैट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, एंड द organelles that are very less in case of prokaryotic organisms, and mainly the ribosomes that are present. And cell wall, this cell wall that is made up of peptidoglycan, जो म्यूकोपोलीसेक्राइड की बनी होती है, सेल वॉल इन केस ऑफ बैक्टीरिया, एंड इट इज़ 2 to 3 लेयर्ड. जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही मतलब उसकी 2-3 लेयर होती हैं, एंड विच मेक द कैप्सूल, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सर्कुलर मेम्ब्रेन, and by the enfolding of the plasma membrane in bacteria, one structure is formed, and that structure is known as mesosome. So the bacteria also have the flagellum or the flagella for the attachment and for their movement. और इनमें एक और स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं pili. So these pili also help the bacteria to the attachment के लिए, जैसे rocks में या कहीं और उनको attachment करनी है, so that also help the bacteria. Now we will discuss the cell envelope and its modification, कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है उसकी कितनी लेयर्स होंगी, और सेल मेम्ब्रेन की क्या मॉडिफिकेशन होगी, और ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेन कि कौन सा बैक्टीरिया कौन से स्टेन को लेगा, उसको हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे. सो दैट वी विल डिस्कस नाउ. Now the cell envelope and its modification. So in case of bacteria, the cell wall that is multi-layered and they form the different structure. So firstly, on the basis of the stain acquired, bacteria are divided into two categories. One is the gram positive and second is the gram negative. So what is its meaning? Means this is a type of stain that is known as the gram stain. Why it is named? Because it is related to the scientist. So if any bacteria can attain this stain, suppose this stain is of black color and
any bacteria is there and this bacteria is taking this stain, then we can say it is gram positive. And if any bacteria that is not taking this stain, then it is gram negative bacteria. So there are the different categories of the bacteria on the basis of the stain also. Next, that is the layer or the envelope of the bacteria. So the bacteria have the outer layer, that is glycocalyx. After that, the cell wall is present and the innermost layer is plasma membrane. So this glycocalyx may be jelly like or the slimy, thin slimy in case of some bacteria, and in case of some bacteria it may be tough, ये hard हो सकती है, and then it make the shape of the capsule. तो वहाँ पे हम जो outer most जो layer है, जैसे बैक्टीरिया का डायग्राम बनाएंगे तो outer layer को हम लिखेंगे capsule. So this capsule is nothing but that is the outermost glycocalyx which develop a tough layer known as capsule. After that, the cell wall. So cell wall, that is the hard layer. In case of plant also it is made up of cellulose, but here it is made up of peptidoglycan or mucopolysaccharide. So like in case of plant, the cell wall protect the bacteria from bursting and collapsing. Bursting means उसको फटने से बचाते हैं या उसको collapse होने से बचाती है. After that, the plasma membrane. So the innermost layer, that is the plasma membrane, and this plasma membrane is same like that in case of eukaryotes. It is also known as plasma lemma. Now the modification of this plasma membrane. So the plasma membrane enfolded into a round structure, and this enfolded structure is known as mesosome. So it help in the cell wall formation. The inner extension of the cell membrane known as the mesosome, and this mesosome help in the cell wall formation, also help in the DNA replication, respiration process में help करेगी, secretion में, and also increase the surface area. जो ये surface area इसको increase कर देगी. Having the respiratory enzymes, इसके अंदर क्या होंगे? Respiratory enzymes होंगे. So help in respiration. So what is the function of mesosome? Cell wall formation, DNA replication, distribution to the daughter cells, उनको distribute करना, और respiration में, secretion में, and also increase the surface area. These mesosomes are of different shape. बैक्टीरिया के अंदर इनकी जो शेप है वो अलग हो सकती है. मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, राउंड शेप हो सकती है, ट्यूबुलर, और एक लैम्बुला की फॉर्म में हो सकती है, सो तो लैम्बुलर. सो देयर शेप इज़ ऑल्सो डिफरेंट. दैट इज़ अबाउट द mesosome. After that, the bacteria also may be the motile or may be non-motile, means some bacteria can move, some are the non-motile. So if they are motile, they have the flagella, so that is the extension of the cell wall, and the flagella have the three part: the basal body, the hook, and the main flagellum part or the filament. Basal body, hook, and the filament. So these are the three parts of the flagellum. After that, means there are the some other structures named as the pili and the fimbriae. So the pili, these are the these like the hair like structures that is arising from the surface of the cell wall, and they help means in the conjugation. जब बैक्टीरिया के अंदर, टू बैक्टीरियाज के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होगा उनके जेनेटिक मटेरियल का, so these pili or these sex pili help. And second is the fimbriae. So these fimbriae are the small bristle like structures
that are arising from the surface of the cell wall, and it help to attach the surface or the attachment on the stones. So that is the function of the fimbriae. And the pili, these help in the means the reproduction in case of the bacteria, means when the bacteria they are transferring their genetic material, so through these pili they join to each other. So we have discussed the prokaryotic cell, especially the bacteria. So what are the different structures present in the bacteria, what is the different property of the bacteria, the types of bacteria on the basis of the stain, the gram stain, that the gram positive or the gram negative stain. After that the cell wall in case of bacteria, also the plasmid, because except the main genomic DNA, the plasmid that is also present in case of bacteria. And after that the cell envelope and its modification. So that is about the bacteria. Thank you.